have to go into my zone and just, keep everybody out and then be Maya. It's so challenging, but it is so fun. I've never done something like this, and I really, really hope that people accept it, understand it, and give it Beyhadh love. Whoa, that is incredible. Before we get into the one-on-ones, what we'll do is photo opportunity, of course, मिलने वाली है. बहुत सारी, आपको पूरा मौका मिलने वाला है. Awesome, brilliant. Kushal, very stylish, very intense. Just starting off with you. मुझे एक बात बताएं, बेहद. It's a word which says a lot. What आपकी जिंदगी कभी बेहद प्यार हुआ है या फिर? बेहद बहुत कुछ हुआ है. So basically, extreme of anything is bad. अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, ज़्यादा गुस्सा होगा तो बीपी हाई हो जाएगा, और ज़्यादा पिएंगे तो लेवल खराब हो जाएगा. तो हमारे शो का क्रक्स है बेहद. कुछ भी अच्छा नहीं होता, प्यार भी नहीं. तो हमारे शो में इतना प्यार है, इतना प्यार है. दोनों तरफ से मुझे प्यार मिल रहा है. So बेहद तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होता है. तो आपकी जिंदगी में कोई है जो ऐसे, जैसे अनेरी keeps guiding you every single time, जो भी करते हैं, she comes there, pops up and say, hey, do this. कभी like मेरी माँ है, मेरी mom always guide me, my dad always guide me. So वो इनका रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में. And is there somebody who came saying that, hey Kushal, बेहद प्यार है, I'm gonna love you, I'm gonna love you whatever happens, and I'm gonna. अब ये इसको सीक्रेट रहने दो यार. All right, Aneri, you're the nice girl. I mean, it's a very pleasant. Are you in life like that as well? Yeah, I'm always smiling, and I'm always like this. इन लोगों में से किसने आपको शो के दौरान किसने सब बेहद वरी किया? Maybe played a prank on you, maybe troubled you. सब मुझे क्यों देख रहे हो? कुशाल keeps doing that. वो यहाँ से वहाँ कूदता रहता है और अपने stupid jokes crack करता रहता है. अगर हमें हंसी नहीं भी आती है तभी भी हमें हंसना पड़ता है. Wow, Jennifer, my God, that was like fantastic entry. Oh my God. Did you actually get inspired by somebody? मतलब किसी को देखकर कि यार मुझे this is how I'm going to do. No, that's the thing. When this role was narrated to me, I don't think anybody on TV, especially a female actor, has had such a powerful character. Entry but the character is so powerful that I was like, oh my God, I have to do this, And a lot of the credit goes to this man here who believed in me from the word go. Like, I went to meet him and we'd actually met for something else, but then he said, no, I have something in mind for you. And I'm like, of course. And it's his belief, it's his motivation that really, really encourages me to push the envelope a little bit further, So thank you, Mr. Danish Khan. I owe this one to you. Thank you so much, Mr. Mehta, our producers. They've given me this brilliant opportunity. In my 16 years of career, I have never boxed anybody, and my hands are still swollen. We were shooting last night, and I had to do a boxing sequence. That was a first time for me in 16 years. So I'm so blessed. I'm so blessed to have been given this opportunity where I get to showcase my little talent that I have, and the belief that all of these guys have in me just encourages me so much. Thank you so much. You said 16 years? Yeah, man. You look 16. Yeah, well, yeah, thank you. That credit goes to my mom. Okay, I have to tell you, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि did you have to unlearn something? I did. It was very difficult. And Amita and all of us, the first scene that we shot, the office scene. So when I was reading, we did it in, a particular way, like how we used to doing it. And then Amita is like, Jen, too much ho gaya. I said, itse kam kya karu main? Matlab, because she speaks through her eyes. She'll just say one line and you have to understand what it is. And if you don't understand, she's going to take your case. So she has to express everything, but
but use very, very few words. So I had to unlearn a lot. A lot. I had to literally, Amita used to tell me, haath bandh kar rakh apne, haath bandh kar rakh, because my hands keep doing this and all of that. So I literally had to unlearn everything that I have done so far. And, he keeps saying that when you're shooting, you're still in your character. She's unlearned smile also. I stopped talking to people. So before I start my day, I actually have to go into a zone and just make these walls around me. Like Maya has these walls around her. Nobody can break those walls. When Arjun will break those walls, break soon. We'll see. But I really have to go into my zone and just keep everybody out, and then be Maya. It's so challenging, but it is so fun. I've never done something like this, and I really, really hope that people accept it, understand it, and give it Beyhadh love. Whoa, that is incredible. Good, big round of applause. Come on, everybody. Aneri, before we get into the Q&A, आपको ऐसा कभी लगता है कि आपको भी बहुत intense गुस्सा आना चाहिए कभी कुशाल को, कभी महसूस हुआ कि because she's doing all the looks and like giving... for Arjun or Kushal? No, both. Both. नहीं, कुशाल पे गुस्सा नहीं आता और अर्जुन पे भी गुस्सा नहीं आएगा, but I'm sure आगे जाके माया पर बहुत सारा गुस्सा आएगा, and I'm waiting for that phase of the story to come when even Sanj is going to be very serious. You are not going to see that smile on Sanj's face for like a long time. And when the character is going to shape up, and how a cute, sweet girl next door girl is going to turn out to be, is going to become actually a very serious girl. और because वो अर्जुन से बेहद प्यार करती है, अब अर्जुन को कोई लेकर जाएगा तो वो थोड़ी ना हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएगी. So आपको भी गुस्सा आता है? जी हाँ, बेहद गुस्सा आता है. मतलब गुस्सा भी इतने प्यार से करिए ना, वो तो सामने वाले बोले और करना यार. Let's do it. All right. Finally, it's a very stylish Arjun. Did you want to do something else which you possibly missed out in these few episodes? No, this is Arjun is a guy from a middle class family, और उसकी बेहद बड़ी ख्वाहिशें हैं, जैसे उसको बड़ा घर चाहिए. He's a जुगाड़ू, he's a complete charmer. बट कैसे उसकी लाइफ में मिस माया उनकी काया पलट देती हैं और सांझ कैसे करती है. सो इट्स अ वेरी इंटेंस स्पाइन थ्रिलिंग थ्रिलर शो, एंड बहुत मेहनत से बनाया है, एंड बहुत टाइम बाद, अरसों बाद एक टीवी में ऐसा शो आ रहा है. एंड थैंक्स टू दानिश भाई, he offered me this role, and I'm sure it's going to be a game changer for Sony and for this sort of concept. ऐसा concept नहीं होता, like it's a finite series, and जैसे concept आ रहा है, it's a very different concept. I'm really looking forward to it. You said जुगाड़ू. मैं बहुत जुगाड़ू, मैं मतलब actual life में भी हो? Actual life में जुगाड़ू हूँ. बहुत जुगाड़ू बॉस में. All right, question for Danish Khan sir. Sir, जैसे आपने expect किया, has it turned out to be like that or much above the expectations? So this is one show which is very different. We didn't have any other option if Jennifer, Kushal or Aneri would have said no. We just had them in our mind, And for the writers and everybody, they imagined them in that role. So it has come out exactly the way we wanted to come out, but both in terms of acting as well as in terms of technical execution. And as we get into the episodes, you will see the execution has been fantastic. And the entire team, Rahib, Amita, Cinevista, everybody, they've done a great job. Not to say much, I think we'll see it on television very soon. Absolutely fantastic. Let's go, boss. Thank you, Mr. Rahib, for a great entry. Sir. Thank you so much. My entry goes to him only. My entry goes to him as well. All right. Okay, now सवाल आप पूछ सकते हैं. If you have a question, please put your hand up. जिन्हें सवाल पूछना है, आप अपना सवाल crisp रखें and सवाल पूछें. हाँ, दानिश साहब, आप तो छा गए. ये जो था हमने आज देखा, राइंदर ये कुछ कितने एपिसोड्स थे, फिर अचानक टर्न होता है लास्ट में, ऐसा हर एपिसोड में ऐसा होगा या? सर अभी तक मैंने कुछ 12 एपिसोड देखे हैं, हर एपिसोड में टर्न होता है, बट जो क्रिएटिव टीम का कोशिश कर रहे हैं कि हर एपिसोड विल बी लाइक दिस, एवरी एपिसोड विल एंड विद अ हुक. ओके, थैंक यू. जेनिफर, आपने इस किरदार को बखूबी निभाया, बहुत अच्छा निभाया. Thank you so much. तो इसके लिए आपने क्या क्या प्रैक्टिस की थी शूटिंग के लिए, और
कितनी फिल्में देखी थी? जी, ये मैं और जो हमारी शो की क्रिएटर है अमिता और तभी एक और कोई हमारे साथ था, हम एक दूसरे को फिल्म्स भेजते रहते थे कि ये देख लो या वॉच दिस एंड गेट इंस्पायर्ड बाय दिस. सो वो मैं अभी भी करती हूँ बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत ही इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, बहुत ही थिन लाइन है जो हम क्रॉस नहीं करना चाहते. और उसके लिए टू गेट द बॉडी लैंग्वेज राइट, टू गेट the dialogue delivery right, and keeping in mind our Indian audiences, वो सब करने के लिए बहुत सारी फिल्में देखी मैंने और अभी भी देखती हूँ. कहीं से भी कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि ये माया ऐसे बैठना चाहिए या ऐसे हाथ होने चाहिए या कुछ, तो वो मैं ले लेती हूँ और कोशिश करती हूँ अपनी तरीके से उसे करने की. श्रीदेवी की लाडला देखी थी आपने? अनिल कपूर श्रीदेवी. उतना इंडियन नहीं जाना है हमको. नहीं, आपका कैरेक्टर काफी मिलता है उससे. नहीं, आप आगे जैसे थोड़ा देखते जाएंगे उससे काफी अलग है. Sir, my marketing team suggested Tuesday because they thought that Monday we won't get a lot of newspaper ad. That's why. It's a very Yes, sir. Yes, sir. Then do I'm a very lazy actress, sir. Then do one Saraswati Chandra. Yes. After that again we had to wait. Yes. तरसेंगे आपको देखने के लिए. How sweet. So how you have this strategy of getting into the right kind of roles? I'm just very lazy, sir. I'm very, very lazy. I like to take some time off. No, actually the thing is that, all the roles that I've done till now have, added, only added feathers to my cap. So I make it a point that whatever I do keeps, that continues to happen. So after Saraswati Chandra, I didn't want to take up something that, I'd been doing for so long. And so I waited. I also needed, like I said, I've been working for 16 years. I need a break. So I took a break. And when you got this offer, Yeah. did you readily accept it or you had some... Oh no, I remember the meeting that we had in Mr. Mehta's office. We finished the meeting, me and my manager Rajiv came down and we were outside the car, we were talking outside the car and I'm like, Rajiv, I have to do this. I don't care about I do care about the money, but I don't care about the money. I have to do this. I have to do this. So it was yes from the beginning. Any workshop you did to get into the role? We were planning to do a workshop, but unfortunately we didn't have the time to do that. But yes, I did see a lot of movies and I did see a lot of international TV shows. And like I said, I still keep seeing things, and if something catches my eye that would look good on Maya, I try to adapt it in my way. Thank you. Thank you. What viewers can expect? See, like you saw, there is drama in the show, there is thriller, there is suspense, there's romance, there's love. So it's a complete package of entertainment. And I think this is what, if you see TV today, we have a lot of kitchen politics everywhere, and that's what's been going on. I was a part of it for a very, very long time. So this is something that your regular audience have not seen on TV yet, not on Indian TV. And the kind of, because of the internet and everything, there's a lot of exposure. People watch international shows, so they know that, there is a show about politics, there's a show about whatever. I think this will put Indian television on a different level. And that is what we hope to do. That is what we really, really hope that, people accept the show, because it's not your regular show. It's like Mr. Danish Khan said, it's very urban. It's very today. It's very in trend. So I hope that it changes Indian TV today and we get to see more genres of television, right? Maybe after a few years, maybe we'll get into politics or something on TV, I'm saying, not in real life. But so I really, really want this show to be the game changer for Indian television. Yeah. Sunil ji.
जेनिफर ने तो कहा कि वो लेजी इसलिए कम सीरियल्स करती है. सिनेविस्टा क्यों कम सीरियल प्रोड्यूस करने लगा? नहीं तो एक ज़माने में तो आप तो लाइन से आते थे और अभी जरा एक गैप हो गया हुआ है. एनी रीजंस? Well, you know, it's been some time since we have come on the air, and I'm extremely glad that we are coming up with a product like Beyhadh. So it's worth the wait for the viewers, and you know, this is one show that will set a milestone amongst television viewing, amongst the GEC channels, we hope. And as Jennifer has, you know, absolutely correctly said, this is a game changer, and she is absolutely wonderful. So is everybody connected with this cast and the team and the creative team. So maybe the wait has been worth for Cinevista and for the viewers. Thank you. वो कहते हैं ना देर आयद दुरुस्त आयद, तो समझ लीजिए अब आ गए हम. हाँ जी जी जी. मुझ पर हावी कौन सा रूप होता है? मैं दोनों में से कोई नहीं. मैं सिर्फ एक ही चीज़ से डरती हूँ, वो है बिल्ली. अगर अभी आप मेरे सामने बिल्ली ले आए तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी. तो ऐसा डर मुझे सिर्फ बिल्ली से लगता है. और मैं बहुत बोलती हूँ. एक्चुअली मैं बहुत मूडी हूँ. तो माया में और मेरे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है. बट वो मेरे ख्याल से हर इंसान में है. हर इंसान में अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ होती है. तो वैसे ही है. निशा वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, पर निशा जब ख़त्म हुआ उसके बाद लोगों को लगा कि मैं सिर्फ एक टॉम बॉयश ही का ही किरदार निभा सकती हूँ. सो आई हैड टू ब्रेक माई टॉम बॉयश इमेज. बट ऑफ कोर्स आई हैव लव्ड निशा एंड सांझ इज समबडी. निशा के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा था. राहिब सर वॉज माई डायरेक्टर इन देन. So we have had like a lot of workshops for Nisha, but for Sanj I had to be myself. और सांझ के लिए भी I think for like a month I had to like unwind myself. I had to just behave as if I am the Aneri that was a year back, because वो निशा बहुत पूरी तरह से घुस चुका था मेरे अंदर. But yeah, I'm glad कि I'm playing Sanj. Sanj is totally different from what Nisha was. She's very cute, very bubbly, girl next door. उसे लड़के पसंद है, लड़कों से प्यार भी करती है वो. So yeah, निशा को लड़के नहीं पसंद थे. Not that she was into girls, but yeah, she was scared of guys. But Sanj absolutely loves Arjun, and I am really happy कि मुझे कुछ different play करने का मौका मिल रहा है. And जैसे कि मैंने कहा कि सांझ में बहुत सारी layers है, so y'all should wait for that to happen. Thank you. All right, we'll take a couple of more questions. Final 2 questions. Yes, madam. Good afternoon. This question is for Mr. Danish Khan. Definitely the show looks very promising. However, we have seen more of happy shows, kind of, or mythological shows on Sony Entertainment. So how this show is going to fit into the overall strategy if we talk about Sony TV? I think we, on weekday prime, we are trying to give variety. Every half an hour is supposed to be different than others. So we have Kuch Rang, Pyar Ke, we launched some 6 odd months back. This is doing well. Then we have Ek Rishta Sajidari Ka, which is pretty much Kavita Barjatiya shows. It's about joint family. This one brings another dimension to drama. So the objective, as you see, and this just, we have started unrolling the show. But in next 6 months, we will launch another 3 to 4 shows. So every half an hour will be slightly different. And 9:30 onwards, 9 o'clock onwards, 9:30, 10, you'll see a slightly more urban dramas. 7:30, 8, you'll see slightly more drama which is much more based out of joint family. So from a strategic point of view, this works very well at 9 o'clock. 9 o'clock is the biggest show. And if you have Kushal, Jennifer and Aneri, you better put it at 9. You know? All right, we'll have one final question. Yes, sir. जेनिफर, ये पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो टेलीविजन स्टार्स को फेम मिलता है, जो कॉम्पनसेशन मिलता है, वो आपके समझ से जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं उनसे कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. तो वो जो डिज़ायर होता है बड़े पर्दे पे काम करने का, वो कुछ हद तक कम हुआ है क्योंकि टेलीविजन वो चीज़ ऑफर कर रहा है आज के ज़माने में. देखिए, मैं एक एक्टर हूँ
मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, भले वो फिल्मों में हो, भले वो टीवी पर हो, भले वो थिएटर में हो, भले वो एड्स में हो। मुझे अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, मुझे अच्छा काम अच्छा लगता है, उसका मीडियम कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पहले से ही कभी ये नहीं था कि oh my god, I want to become a movie actor. I always loved acting, and whatever the medium may be, I'm happy with that. Alright, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीम के लिए. Absolutely fantastic. Can we have the rest of the cast on the stage, please? हम बाकी जो कास्ट है हमारी बेहद की, हम चाहते हैं कि वो भी स्टेज पर आ जाए for a photo opportunity. लव बहुत पसंद है मुझे. प्यार शब्द से ही प्यार है, और प्यार जरूरी नहीं होता कि एक लड़की से करना चाहिए. माँ से भी प्यार होता है, बाप से भी होता है, बहन से भी होता है, भाई से भी होता है, दोस्तों से भी होता है. सो आई लव लव एंड आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ लव. आई लव लव. लड़की से ज़्यादा लड़के से उसमें प्यार होगा मुझे. आई लव गर्ल्स ओनली. सबका अलग अलग प्यार होता है. माँ का प्यार अलग होता है, बहन का अलग होता है, भाई का अलग होता है. मतलब सवाल आप पूछ रहे हो, कह रहे हो लड़की से होता है कि नहीं होता है. आप शर्मा क्यों, डर रहे हो, खुद ही डर रहे हो. इस शो की बात करें तो प्यार एक लवर की बात हो जी. उस लवर के बारे में प्यार कैसे से डिफाइन करोगे? प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है, एंड एक लवर बॉय को प्यार करना चाहिए. और मेरे पास तो दो लड़कियां हैं, चाहे 12 घंटे के लिए प्यार करती है मेरे को, बट करती तो हैं. 12 घंटे में कहीं और काम चला लूँगा. हाँ, मेरी माँ होती है. मेरी माँ की बहुत याद आती है मेरे को. अभी आ रही है वो. Jennifer, how do you define love? How do I define love? Love is something that should make you feel happy. I think love is equal to happiness. And if that is achieved, then love it is. Love it is. Love for me is of course happiness. और जब कोई इंसान आपको बहुत ही स्पेशल फील करवाता है, वो आपको अपने आप पता चल जाता है, बिकॉज जिस तरीके से आपको स्पेशल फील कराते हैं वो बहुत ही अलग होता है. सो आई लाइक दैट फीलिंग स्पेशल. ऑडियंस को काफी वेट करना पड़ा इस शो के लिए, कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाता है. अब फाइनल डेट आ गया. कितना आप लोगों को एक्साइटमेंट है? ओह गॉश, हम बहुत एक्साइटेड हैं. बूमरैंग की तरह एक्साइटेड हैं. बहुत यार, आई मीन बहुत वेट करना पड़ा. सिर्फ ऑडियंस को नहीं, हमने भी बहुत वेट किया है. बट अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है, और फॉर मी इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली वर्थ the wait, and I'm sure that for everybody else who watches the show, they're going to say the same thing, that fine, we waited, but it's worth the exactly. सर, मैं दूसरे चैनल के बारे में बात नहीं करता. अभी मैं सोनी की में खड़ा हूँ, बेहद के बारे में बात करूँगा. कितने एक्साइटेड है उसको देखने के लिए, क्योंकि इस बार सेलिब्रिटीज का तो कॉमन मैन भी उसमें कंटेस्टेंट है, तो क्या कहना? सर, मैं सोनी में खड़ा हूँ, मैं दूसरे चैनल के बारे में बात ही नहीं कर सकता. आई एम सॉरी. बेहद बहुत अच्छा है, बेहद बहुत अच्छा शो है, एंड बहुत मेहनत से बनाया है, नीयत साफ है, एंड गेम चेंजर शो है. हम तीनों ने बहुत मेहनत की है. प्लीज़ बेहद देखिए कल से 9 बजे सोनी. जियो सोनी.